Hello everyone. In this session, we are going to solve class 11th practice MCQ sheet of chapter 9 mechanical properties of fluid, which I have given to you in classroom. Because as you know that after some days our exam is coming, and for the preparation it might be helpful to you. So without wasting any time, let's come to the question number 1. A tall cylinder is filled with viscous oil. A tall cylinder is filled with viscous oil. A round pebble is dropped from the top with zero initial velocity. From top, the plot shown in figure indicate that one that represents velocity v of the bubble as the function of time. See, this question is of terminal velocity, and we know that for terminal velocity we can write 6 pi eta rv, where after some time force became constant. So for the constant force, here two options C and D, but as you know that here it is directly dropped. That not happen because we have done the practical of this practical in the classroom also. So our answer will be C. Next question. The velocity of water in river. Velocity of water, we have discussed this question and take some more examples that velocity is faster at the banks and lower. Velocity is faster at the middle and lower at the bank. See, because of pressure difference we had studied, or there are many other parameters like friction, objects, or adhesive force, that etc. we have studied. Next question. A wind with the speed 40 meter per second blows parallel to the roof of house. The area of roof is 250 meters square. Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the top of the direction of force will be. So for that we know that according to Bernoulli's principle, P0 plus half rho v square is equals to P1 plus half rho v1 square. Here we can neglect height because that height of ceiling is maximally 3 to 4 meter, which could be neglected in terms of pressure difference. So for that, if we see delta P, so delta P is equals to P minus P1 is equals to half rho v1 square. Why? Because at the bottom no velocity will be there. And for the force, we know that for force is equals to pressure into area, and here it is delta pressure, so P minus P1 into area, and moving further, P minus P1 is equals to half rho 1 square into A, and for that 1 by 2 rho is given 1.2 multiplied by velocity is given 40 square, and area is 250. So 4245 into 10 to the power minus 4. See, this much pressure is at the top of the roof, and at bottom there is room temperature. So we know that the pressure will be goes upward direction. So answer will be C. Next question. A rectangular film of liquid is extended from 2 centimeter 4 centimeter by 2 centimeter to 5 centimeter by 4 centimeter. If the work done is 3 into 10 to the power minus 4 joule, the value of surface tension for that liquid. Okay, we know that in film has two free areas or two free surface. So for that we can write 2 delta A. So 2 into 4, example first, 5 into 4 multiplied by 10 to the power minus 4 minus 4 into 2 into 10 to the power minus 4. So this answer will be 24 into 10 to the power minus 4 meter square.
that is area. And for work done, we know that for work done 2T delta A, and we have to find surface tension. So T is equals to work done upon 2 delta A, and we have work done given in the question 3 into 10 to the power minus 4, and area will be 24 into 10 to the पावर माइनस 4. हाँ, एरिया हमने फाइंड कर लिया था इस क्वेश्चन से. सो ऑन मूविंग फर्दर दिस विल बी 1.25 न्यूटन पर मीटर. आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 liquids of density rho 1, rho 2, rho 3. Rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3 have the same value of free surface tension T. Same value of surface tension. The rise of same height in 3 identical capillaries. The angle is theta 1, theta 2, theta 3. Okay. So सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में ऐसा दिया है, सपोज कि कोई कैपिलरी राइज है. फॉर एग्जांपल तरीके तीनों कैपिलरी राइज आइडेंटिकल है और कोई विस्कस लिक्विड फिल किया है. तो विस्कस लिक्विड फिल किया है तो इस तरीके से कुछ कंडीशन होगा कि इसके अंदर लिक्विड का कुछ राइज देखने को मिलेगा हमें यहाँ. और जो राइज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो बन रहा है वो है थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 4 रिस्पेक्टिवली 3. एंड एक का डेंसिटी 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है. सो इन दिस सही रिलेशन कौन सा है इन सब में से. सो फॉर दैट हमें पता है हाइट इन कैपिलरी ट्यूब एच का क्या इक्वेशन है, तो कि 2t cos थीटा डिवाइड बाई एल रो जी. यहाँ हमें कांस्टेंट सब क्या दिया है, तो कि थीटा एंड रो इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है. तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा 1 डिवाइड बाई रो 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 डिवाइड बाई रो 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3 divided by rho 3. But we know that rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3 given in the question. So according to this, cos theta 1 should be greater than cos theta 2 and that should be greater than cos theta 3. So according to this, it is clear theta 1 will be less because cos is decreasing function and angle will be acute according to this equation. So answer will be D. Next question. Work of 3 into 10 to the power minus 4 joule is required to done an increasing in the size of soap film from 10 centimeter to 6 centimeter to 10 centimeter to 11 centimeter. The free surface. See, we have done this question in question number 4 also. Similar question for surface tension. 6th वाले जैसा ही है. सरफेस टेंशन क्या था, तो कि वर्क बाय एरिया, वर्क डन डिवाइड बाय इंक्रीज इन एरिया. इन दिस क्वेश्चन अगर हम देखें फॉर बबल में हमें 2 लेयर्स दिखती है तो एरिया इज इक्वल्स टू 2a हो जाएगा. सो T इज इक्वल्स टू वर्क क्या दिया है, तो कि 3 into 10 to the power minus 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 into 11 minus 10 into 6 into 10 to the power minus 4. So answer will be 3 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. Option B. Moving further, neglecting the density of air, terminal velocity obtained by raindrop of radius 3 mm flowing through an air of viscosity 1.8 into 10 to the power 5 will be. Okay. So for that, for terminal velocity we have to obtain. So terminal velocity Vt is equals to 2r square rho g divided by 9 eta.
simple question. We have to just put the formula 2 into 0.3 square into 10 to the power 3 multiply by 9.8 divide by 9 into 1.8 multiply by 10 to the power minus 5. So answer will be 10.9 meter per second. A. Next question. A liquid is kept in a cylindrical vessel which is being rotated about the axis through the center of the circular base. If the radius of the vessel is r and the angular velocity of rotation is omega, then the difference in the height of the liquid at the center of the vessel and at the edges is okay. तो क्या दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में, तो कि सपोज़ कि कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड को हम रोटेट करवा रहे हैं, बराबर है। और क्या दिया है, तो कि ये जो वेसल है उसका रेडियस आर है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, तो कि बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का हेल्प कर सकते हैं। और देखो यहाँ हाइट राइज होगा h1 वी ऑलवेज इक्वल्स मीन्स नियरली इक्वल्स टू h2। सो हाइट राइज को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो PA माइनस PB इज इक्वल्स टू 1/2 रो VB स्क्वेयर माइनस VA स्क्वेयर एंड at VA initial velocity will be 0 and pressure difference we know that h rho g is equals to 1/2 rho and velocity is equals to r omega square. Here rho will be deleted, so height will be 1/2 g r square omega square by 2g, option B. Next question. A hole is made at the bottom of a tank having water. If the total pressure at the bottom is 3 atmosphere, 1 atmosphere is equals to 10 to the power 5 Newton meter square, then the velocity of water flowing from hole will be. सबसे पहले ऐसा समझते हैं कि एक कंटेनर दिया है और इस कंटेनर में यहाँ कहीं एक होल कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, तो कि वाटर बाहर आ रहा है और ये पूरा वाटर है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कि हियर एट बॉटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 3 atm है और यहाँ क्या होगा, तो कि 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, तो कि P1 माइनस P0 मीन्स 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देखें तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, h रो जी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5। फाइन क्या करना है, हाइट, तो क्या करें 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई रो इंटू जी। सो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई h, सॉरी इधर रो आएगा, रो क्या देंगे 10 टू द पावर 3 इंटू 10, आंसर आएगा 20 मीटर। अभी क्या हुआ, तो कि ये फॉल कर रहा है 20 मीटर के हाइट से, बराबर है। बट वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू नो दैट स्पीड ऑफ ए प्लस 2gh रूट 2gh। सो अकॉर्डिंग टू दिस 2 इंटू 10 इंटू हाइट 20, सो आंसर विल बी अंडर रूट 400 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 cm from the soap solution is nearly okay. एनर्जी हमें फाइंड करनी है सोप बबल की जो 2 सेंटीमीटर का रेडियस का हमें बनाना है। सपोज़ कि कोई सोप बबल है जिसका 2 सेंटीमीटर का अमाउंट हमें बनाना है, तो उसके बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा वो फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, for energy we can say that 2 delta A into T, because soap bubble has 2 free surfaces. So for that surface tension is 0.03 given in question, multiply by 4 pi r square area, here r2 square minus r1 square into 2. But for example r1 will be 0, at initially it is 0 and then we have to make it,
So 0.12 into pi multiply by r square, 4 into 10 to the power minus 4 multiply by 2. So answer will be 3.014 into 10 to the power 4 joule. So 3.01 into 10 to the power 4 joule. A spherical ball is dropped in along a column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown, which represents the speed of the ball v as a function of time. सी क्वेश्चन नंबर 1 जो दिखा था उसकी तरह ये कि टर्मिनल वेलोसिटी का आता है तो ऑप्शन आएगा डी, कि बी वाला है वो करेक्ट इस तरीके से दिखा रहा है, बाकी का कोई सेट नहीं हो रहा है टर्मिनल वेलोसिटी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच force must be exerted on a small cylindrical piston of a hydraulic press to produce a force of 10 to the power 6 Newton. The larger cylinder piston has a radius of 1 meter and the smaller cylinder piston has radius 25 centimeter. So, a question of hydraulic lift type is given, that here it is one piston and here it is another piston. But this one is of 25 centimeter and this one is of 1 meter, and we have to find the pressure. Sorry, we have to find mass. For that we know that it is P1 is equals to P2 and or PA1 is equals to F2A2. Therefore F1 is equals to F2 divided by pi r1 square by pi r2 square. Pi will be removed. So therefore m into g, we can write this is the mg is equals to f2 divided by r1 square by r2 square. Therefore m is equals to 10 to the power 6 multiplied by 25 into 10 to the power minus 2 square divided by 10 g. So answer will be 625 into 10 to the power 10 by 2 मतलब 26520. ऑप्शन बी हाँ सेट है, ऑप्शन बी तो है। चलो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाइए। तो कैसे a capillary tube made of glass of radius 0.15 mm is deeply vertical in a beaker filled with a methylene iodide which rises at height h. In the tube, it is observed that two tangents drawn from the liquid in a glass surface interface from opposite sides of capillary rise, making angle of 60 degree with one another. Okay. So according to this question क्या दिया है हमें कि सबसे पहले कोई कैपिलरी राइज सबसे पहले सपोज हम देखें कोई कैपिलरी राइज है, उसके अंदर लिक्विड हाइट हो रहा है और एंगल ऑफ जो कॉन्टैक्ट आ रहा है यहाँ से और यहाँ से ये 60 डिग्री है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। कैसे देखो थोड़ा डिटेल में बात करें तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बोला था कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब लिक्विड का सरफेस के साथ जो ड्रॉ करो और टेंजेंट निकलता है वो मीन्स कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, और अगर ये 30 तो यहाँ से ड्रॉ करो तो ये भी 30 होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक सेकेंड थोड़ा एडजस्टमेंट, हाँ हमारा फाइट क्या करना है तो क्या हाइट कितना आएगा, तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या था 2s cos थीटा डिवाइड बाई रो जी ए। तो थीटा क्या आएगा तो क्या थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो फॉर दिस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.05 सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 667 इंटू 10 इंटू 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड अगर इसको कैलकुलेट करते आंसर क्या आएगा 0.87 मीटर। ऑप्शन बी। मूविंग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब
as shown in figure, then the velocity of the liquid coming out of the tube area is okay. So for this question we can use from equation of continuity. From continuity equation we can write A1 V1 is equals to A2 V2 plus A3 V3, बिकॉज जो भी लिक्विड यहाँ आएगा इनकम्प्रेसिबल है तो यहाँ से और यहाँ से दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। एंड एरिया तीनों पोर्शन का दो पोर्शन का सेम है, तीसरे का अलग है। सो एरिया के रिस्पेक्ट में ऐसा लिख सकते हैं A1 V1 प्लस A1 V1 इज इक्वल्स टू A V2 प्लस 2.5 A V3, यहाँ 2.5 है तो देयरफॉर ए कैंसिल हो सकता है। सो V1 प्लस V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस 2.5 V3। हाँ, और यहाँ का जो V2 है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, V3 हमें फाइंड करना है और V1 है वो 6 है। सो देयरफॉर 6 इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 2.5 इंटू V3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 V इज इक्वल्स टू 3.5। सो देयरफॉर V3 इज इक्वल्स टू 35/25 विच इज इक्वल्स टू 7/5। क्वेश्चन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An air bubble of diameter 2 mm is steadily rise through a solution of densities 1750 kg per meter cube at a rate of 0.35 centimeter per second. The coefficient of viscosity of the solution is, neglect the density of air. So क्या बोला है देखो, तो कि एक एयर बबल है वो कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है। सो एयर बबल कंटिन्यूसली स्टेडी रेट से आ रहा है, पर उसमें क्या होगा कि यहाँ दो फोर्स है वो एक दूसरे से बैलेंस करेंगे। कौन सा? तो कि फोर्स ऑफ बॉयंस इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को मिक्स करेंगे। और बॉयंस फोर्स हमें क्या पता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू सिग्मा जी। और डिस्प्लेस क्या होगा, 6/5 ईटा RV। सो देयरफॉर विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल्स टू 4r² सिग्मा जी डिवाइड बाई 3 इंटू 6 इंटू V। सो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू 2/9 इंटू r² सिग्मा जी इंटू V। ये फॉर्मूला हमें पता है, क्लासरूम में भी डिराइव किया है, बस इसी का यूज़ करना है। क्या होगा, सो 2/9 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 1750 डिवाइड बाई 0.35 इंटू 10⁻²। सो ऑन सॉल्विंग दिस आंसर विल बी 1.1 इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट। और अगर हम देखें इन CGS यूनिट तो क्या होगा 11 CGS। देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन इसलिए कोई भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। A small bubble of radius 4 cm is tapped inside another bubble of radius 6 cm without any contact. Let P2 be the pressure inside the inner bubble and P0 pressure inside the outer bubble. The radius of the another bubble with difference P2 minus P0 inside and outside will be. See, according to the question ऐसा दिया है कि कोई बबल है, सपोज कि यहाँ का प्रेशर P2 है जो कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, और एक बबल आउटर साइड दिया है जो 6 सेंटीमीटर का है, और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस हमें फाइंड करना है इन दोनों का।
ऐसा देख सकते हैं कि ये P2 इंटू ये रेडियस R टाइप क्वेश्चन हुआ। सो फॉर देट 2 केस हमें कंसिडर करने होंगे। पहला कौन सा, तो कि प्रेशर एट P2 पॉइंट इज इक्वल्स टू P0 प्लस 4s/6 प्लस 4s/4 रेडियस। सो P2 माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4s/6 प्लस 4s/4। सपोज कि यही क्वेश्चन 1 है। और दूसरा केस क्या, तो कि इनर साइड वाला जो है सिर्फ उसका देखें तो P2 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 4s/r, जो दूसरा वाला प्रेशर डिफरेंस है वो। तो देयरफॉर P2 माइनस P0 इज इक्वल्स टू 4s/r। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। दोनों को कंपेयर करें तो ऐसा लिख सकते हैं 4s/r इज इक्वल्स टू 4s/6 प्लस 4s/4। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर में देखें तो क्या होगा, 1/4, 1/r इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/4। सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 12/5 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass m of liquid of a density rho is filled in a light beaker and kept on a horizontal table as shown in figure. The height of liquid in the beaker is h. The beaker is a wither on a top and its base cross section area is a. यहाँ थोड़ा एरिया बड़ा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। सपोज बेस वाला ए है। निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसा है, कोई बिकर दिया है, लिक्विड फिल किया, हाइट h है और डेंसिटी रो है, तो इन दिस क्वेश्चन अभी सूटेबल सॉल्यूशंस कौन सा है। सो प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ बॉटम सरफेस इज ρgh। तो हाँ, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉरी ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th वन। द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज डबल एज इट राइज फ्रॉम बॉटम ऑफ अ लेक टू इट्स सरफेस। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 75 centimeter of mercury. The ratio of density of mercury to the density of lake water is 40/3. Then depth of lake is okay. So according to the question ऐसा कुछ दिया है कि लेक है और इस लेक कोई लेक है, ऐसा समझते हैं कि बॉटम सरफेस है और यहाँ से कोई बबल ड्रॉप है ऊपर आ रहा है और इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो 40/3 दिया है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी का 75 mg दिखा रहा है। सो अभी क्या करना है, तो कि हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द लेक की, लेक कितना डेप्थ पे है। सो फॉर दैट वी कैन राइट P1 इज इक्वल्स टू P2 सॉरी P1 V1 P1 V1 is equals to P2 V2 and for pressure we know that P0 plus H rho G, ये कौन सा, तो कि वाटर वाला इंटू V, और आएगा क्या है, तो कि P0 इंटू 2V डबल। therefore P0 is equals to H rho G is equals to 2P0। सपोज पहला वाला ही देख रहे हैं। V तो यहाँ से ही कट हो गया। सो देयरफॉर P0 इज इक्वल्स टू H रो G। अभी क्या हुआ, तो क्या अभी सपोज प्रेशर कंपेयर करें तो क्या होगा, H रो H इंटू जी, ये सपोज मर्क्यूरी वाला इंटू H रो W इंटू जी, तो क्या होगा H G इज इक्वल्स टू, मतलब हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू H, सॉरी ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी या हाइट ऑफ ग्राउंड मतलब वाटर वाला है, इंटू हाइट रो जी इंटू रो, एक सेकंड कुछ लिखने में गलती कर दिया। हाँ હવે થશે એચ જી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે, તો કે હાઇટ ઇન્ટુ સિગ્મા ડેન્સિટી વાળું મલ્ટીપ્લાય બાય જી
divided by rho W. So according to this 75 multiply by 40/3. हाँ આ રીતની ક્વેશ્ચન છે. તો હવે આનો આન્સર કરો તો શું થાય? 1000 સેન્ટીમીટર. So answer is 10 meter. The block of wood of mass 2 kg and density 5 into 10 to the power 3 kg per meter cube is suspended from a string. What will be the tension in the string if the block is completely immersed in the water? Okay, so according to the question ऐसा कुछ दिया है कि कोई ब्लॉक है, इसको स्ट्रिंग के साथ टाई किया है और सपोज़ ये जो पूरी सिस्टम है उसको वाटर के अंदर लगा दिया, तो इसके अंदर टेंशन क्या होगा? फॉर दैट दो कंडीशन होगी. एक क्या तो कि ये ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. दूसरा क्या तो कि स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और लिक्विड है तो बॉइंस फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो इसको बैलेंस करना हो तो ऐसा बोल सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू FB प्लस T टेंशन फोर्स. तो क्या होगा? तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू M इंटू G, मतलब 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन. तो ये जो कंसिडर है उसको 20 न्यूटन बोल सकते हैं. और सपोज़ कि इक्वेशन 1. और दूसरा क्या तो कि दूसरा FB बॉयल्स फोर्स फाइंड करना है, रो VG. तो रो क्या दिया है? 10 टू द पावर 3 वाटर है. V क्या होगा? तो कि 2 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 10. So answer will be 0.1234 into 10 to the power 4. So which is almost equals to 4 Newton. Sorry. Which is almost equals to 4 Newton. So ये इक्वेशन 2. सो प्लेस करिए तो क्या वैल्यू मिलेगा? तो कि 4 और यहाँ क्या है? एक सेकेंड है, ये 20 मिला है इंटू 4 और ये T. सो देयरफॉर टेंसल फोर्स कितना होगा? 16 न्यूटन का. 16 ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 10 सेंटीमीटर on a side floats at an interface of liquid and oil is shown in figure. देखो ये कंटेनर है, यहाँ ऑयल है और ये सपोज कि कोई वाटर है और ब्लॉक है वो दोनों के सरफेस के बीच में फ्लोट कर रहा है और ऑयल का डेंसिटी दिया है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का हम पता है 1 लेते हैं. सो मास ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. तो फॉर मास ऑफ ब्लॉक फिर से वही क्वेश्चन कि ये जो है तो क्या होगा तो कि फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा. मतलब फोर्स जो ऑयल से लग रहा है प्लस फोर्स जो W से लग रहा है वाटर से, इन दोनों का वो क्या होगा तो कि वो उसका mg वेट जितना होगा. तो ऑयल से देखिए तो V0 इंटू रो जी प्लस ये क्या होगा तो कि रो W इंटू VG इज इक्वल्स टू mg. तो G कैंसिल हो सकता है सब जगह से, G कैंसिल. सो M इन सो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा तो कि सबसे पहले याद है क्या दिया है तो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी कितना करेंगे? 0.6 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 10 इंटू 10 इंटू 6 प्लस क्या होगा तो प्लस ऑयल वाटर वाला. तो वाटर में क्या आएगा? वही 10 इंटू 10 इंटू 4. डायमेंशंस वाटर दोनों के दिए है. तो ऑन सॉल्विंग दिस ये क्या आएगा? 360 और ये क्या आएगा? 400. So answer will be 760 G. ग्राम 760 ग्राम होगा. 21 क्वेश्चन. It's okay है. Water is flowing through a canal that has 12 meter width
with the speed of 0.75 meter per second. Then water is flowing through 4 identical channels with the width of 0.4 meter, 4 meter, 4 meter canals. The depth of the water does not change as flow into the other 4 canals. The speed of the water in one of the smaller canal will be okay. So फिर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है कि सपोज ऐसा समझते हैं यहाँ से वाटर आ रहा है और 4 डिफरेंट पार्ट में जा रहा है, तो इनमें से किसी भी एक का हमें स्पीड निकालना है कि इस पोर्शन में उसके लिए कितना स्पीड होगा. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू वी इज इक्वल्स टू A1V1, A2V2, A3V3 और A4V4 और सब इक्वल है. तो A1V1 इज इक्वल्स टू 4 A1V1 और A1 क्या दिया है 12 मल्टीप्लाई बाई 0.75 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 और इंटू वेलोसिटी V. So therefore V is equals to 3/4 into 0.75. So answer will be 0.56 meter per second. A. Next question. The cylindrical tube. एक second. The cylindrical tube of spray pump has cross section area of 8 centimeter square, one end of which has 40 fine holes, each of area 10 into 10 to the power minus 8 meter square. If the liquid flowed inside the tube with the speed of 0.15 meter per minute, find the speed with which of the following liquid is ejected from the holes. Okay, अगेन वही है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन है. क्या बोल रहा है तो कि A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2. सपोज कोई लिक्विड से फ्लो आ रहा है, तो एरिया सबसे पहले क्या दिया है तो कि 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी क्या दिया है 15.15 मिनट पर मीटर पर मिनट. तो ऐसा लिख सकते हैं 1.15 डिवाइड बाई 60. और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है तो नेक्स्ट साइड क्या दिया है तो कि एरिया कितना 40 फाइन होल्स, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 2v2. देखिए अगर थोड़ा क्वेश्चन को और डिटेल में समझे तो क्या दिया है तो किस कोई एक सिलेंडरिकल पंप है, सपोज़ कि कोई खेतों में एयर लगाने वाला, तो वहाँ से सपोज़ ये उसका हैंडल है और ये हैंडल है और यहाँ से कोई स्मॉल पोर्शन है जिससे वाटर बाहर आता है. तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे 40 स्मॉल होल्स दिए हैं 40, और ये जो 40 स्मॉल होल्स है उनमें एक का जो है वो 8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर स्क्वायर का एरिया है, मतलब मल्टीप्लाई बाई टोटल 40 होगा. और यहाँ का जो आउटर वाला है वो टोटल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का है. और यहाँ से जो लिक्विड अंदर जा रहा है वो 0.15 मीटर पर मिनट के रिस्पेक्ट में जा रहा है. तो यहाँ से कितना बाहर आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन में दिया है. सो therefore V2 is equals to 8 into 10 to the power minus 4 divided by 40 into 10 to the power minus 8 multiplied by 0.15 divided by 60. Solving this क्या होगा 8 into 10 to the power 4, नीचे का पावर एडजस्ट करो, into 10 to the power 15.15 डिवाइड बाई 2400, तो 5 मीटर पर सेकेंड चाहिए. हाँ ये. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एन एल शेप ट्यूब विथ स्मॉल reference is held in water stream as shown in figure. The upper end of the tube is 10.6 centimeter above the surface of the water. What will be the height of the jet of water coming out from the orifice? Velocity of the water stream is 2.45 meter per second. Okay, so according to the question એવું કે પૂછો કે અહીંયાથી વોટર છે તે 2.5 મીટર પર સેકન્ડથી અંદર જાય છે અને વોટર સરફેસથી આની હાઇટ કેટલી છે તો કે 10.6 સેન્ટીમીટર બરાબર છે. અને આપણે ઉપર કેટલા હાઇટે વોટર છે તે જેટ આખું બહાર આવશે એ ફાઇન કરવાનું છે. તો હાઇટ માટે શું થશે તો કે V² by 2g
અને વી શું આપ્યું છે તો કે 2.45 સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2 ઇન્ટુ 10 તો 0.314 મીટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 31.4 સેન્ટીમીટર થયું. બટ શું થશે તો કે વોટર સરફેસથી જે આ હાઇટ છે એ કેટલી છે, સોરી વોટર સરફેસથી આ વાળી હાઇટ છે એ 10.6 આપી છે. તો શું કરીએ તો કે 31.4 માઇનસ 10.6, સો આન્સર શું થશે 20.8 બી. Next question. A metal block of base R 0.20 meter square is placed on a table as shown in figure. A liquid film of thickness 0.25 mm is inserted between the block and the table. The block is pushed by the horizontal force of 1 Newton and moves with a constant speed. If the viscosity of liquid is 5 into 10 to the power minus 3 pi, find the speed of the block. Speed of the block find करनी है इस क्वेश्चन में. सो हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू एफ डी ए इंटू ईटा, वेर एफ क्या है तो कि एफ फोर्स ऑन ब्लॉक, डी क्या है तो कि थिकनेस है ये, फिर इस विस्कोसिटी ईटा एंड ए इज एरिया. सो ऑल द क्वेश्चंस आर, ऑल द क्वांटिटीज इज गिवन. फोर्स कितना है तो कि 0.1 इंटू डी, थिकनेस कितना होगा तो कि 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई क्या दिया है तो कि एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर और ये 5 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ कट करो 0.05 आएगा तो आंसर क्या आएगा 0.25, सॉरी एक जीरो हो रहेगा 0.025. So answer will be 25 into 10 to the power minus 3 meter per second. So option થઈ જશે 25. By increasing the temperature of liquid, we know that on increasing the temperature, density is equals to mass upon volume. So according to this क्या होगा तो कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इससे क्या होगा तो इसका वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होगा और इसका डेंसिटी कम होगा. तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर राइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोर्शन थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5 GCC एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 0.25 centimeter per second. If the density of air is neglected, the coefficient of viscosity of liquid is approximately, okay. So according to this क्या दिया है तो कि viscosity फाइंड करनी है. तो viscosity के लिए हम क्या सकते हैं 2/9 इंटू आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाई एन. सो देयर फॉर viscosity n इज इक्वल्स टू 2r स्क्वेयर डिवाइड बाई 9v सिग्मा जी इंटू जी, और v क्या होगा टर्मिनल वेलोसिटी जो गिवन इन द क्वेश्चन. तो इसको 2/9 मल्टीप्लाई बाई 0.01 स्क्वेयर, यहाँ क्या होगा तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. So therefore eta is equals to 310 into 66.76. तो आंसर 360. हाँ आ गया. जो इजी क्वेश्चन હતો ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુજ મૂકવાની હતી, બહુ કેલ્ક્યુલેશનમાં કંઈ જવાની જરૂર પણ નહોતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન देखते हैं क्या है. The spherical ball of radius r are falling in a viscous fluid of viscosity eta with a velocity v. The retarding viscous force acting on a spherical ball is, okay. अगेन टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन है और हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी में फोर्स का क्या था तो कि 6 पाई ईटा आर वी. तो क्या हुआ तो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी. बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ यू शेप ट्यूब with two ends open to the atmosphere is partially filled with water, oil,
which is immersed with the water is poured into one side until it stands at a 10 centimeter ઓકે, આ રીતના 10 સેન્ટીમીટર થાય છે. above the water levels on the other side is meanwhile rises by 65 mm from its original. ઓકે, ફાઇન્ડ શું કરવાનું કીધું છે તો કે ડેન્સિટી ઓફ ધ ઓઇલ. હા, તો જો આ ક્વેશ્ચનમાં એ રીતના પૂછે સપોઝ કે આ વોટર ફિલ કરેલું છે અને અહીંયા ઓઇલ છે. હવે ઇનિશિયલી સપોઝ કે વોટર છે તે 65 mm જાય છે. જ્યારે ઓઇલ ઇમર્સ કરીએ છીએ ત્યારે એના આસપાસ શું થશે તો કે બીજું 65 mm ફાઇનલી વોટર લેવલ અપ થઈ જાય છે અને એના કારણે શું થશે તો કે આ જે પોર્શન છે ત્યાં 10 mm નો ડિફરન્સ જોવા મળે. તો હવે આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે તો કે ડેન્સિટી ઓફ વોટર. તો આ કેસમાં જો એકવાર ક્વેશ્ચન સમજી લઈએ. તો ક્વેશ્ચન એકોર્ડિંગ ટુ ક્વેશ્ચન શું કહે છે તો કે જો ઓઇલ છે તે ઇનકમ્પ્રેસિબલ છે વિથ વોટર, બરાબર છે. હવે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે ઓઇલ તમે ફિલ કરો છો ત્યારે વોટર લેવલ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે 65 હતું. મતલબ ક્યારે તો કે ત્યારે જ્યારે ઓઇલ હતું જ નહીં, બસ ખાલી વોટર હતું ત્યારની કન્ડિશન છે. હવે ધીરે ધીરે ઓઇલ આ સાઈડથી ફિલ કરતા થતું એટલે શું થશે તો કે અહીંયાથી વોટર છે તે ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. ક્યાં સુધી કે તો નેક્સ્ટ 65 mm સુધી એને ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે. તો આ ફાઇનલ પોઝિશન થઈ ગઈ ઓઇલની कि તમે ઓટલું इतना अमाउंट ऑफ ऑयल जब आप इंसर्ट करोगे तब वाटर लेवल यहाँ तक पहुँचेगा. और कब स्टॉप करना है तो कि जब ये 10 mm हो जाए. ये जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, जो ऑयल का लेवल है और उसके वाटर के लेवल के जो 10 mm रह जाए यहाँ तक हमें फिल करना है. मतलब ये जो फिगर है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये एम्प्टी पोर्शन आएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, बराबर है. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो क्या होगा तो कि रो 0 इंटू जी एच इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू इंटू जी एच. प्रेशर ओपन एटमोस्फियर की है तो रो जी. हाइट यहाँ कितनी होगी तो कि हाइट यहाँ टोटल कितनी होगी तो कि 140 mm इंटू 10⁻⁻3. और ये क्या होगी तो कि ये ऑयल वाली हाइट हो गई टोटल 140. और वाटर वाली हाइट करें तो क्या होगा तो कि वाटर कितना राइज होगा तो कि 130 का एच रो डब्ल्यू. और ये हाइट कितनी हो गई 130 इंटू 10⁻⁻3. तो देयरफॉर रो 0 इज इक्वल्स टू 130 डिवाइड बाई 140 इंटू 10⁻3 वाटर की डेंसिटी. सो आंसर विल बी 928 kg/m3. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन શું કહે છે? A small sphere of radius r moving with terminal velocity in a liquid having viscous coefficient eta dash is true for. ઓકે, સો સ્ફિયર છે આ રેડિયસ અને ટર્મિનલ વેલોસિટીથી મૂવ થાય છે, બરાબર છે. તો જો આ કેસમાં શું થયું તો કે ટર્મિનલ વેલોસિટી છે એનો મતલબ એમ કે 6π eta rv is equals to mg. therefore vr is equals to mg divided by 6π eta r. So vr is directly proportional to mg divided by eta r. So mg divided by eta r means this. અને ડાયરેક્ટલી સપોઝ કે વેરીફાઈ કરવું છે કે આ તો શું કરવું તો કે ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલાથી ડાયરેક્ટ વેરીફાઈ કરી લો અથવા તો ડાયરેક્ટ ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા જ ફાઇન્ડ કરી લો કે વિસ્કોસિટી है तो विस्कोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी शो m0 L1 T -1. तो आ पोर्शन में कन्फर्म कर दो, आंसर तुम्हारा सेट थी जैसे. नेक्स्ट 30 शू कहे छे? A small solid sphere acquires terminal velocity in a viscous medium. We match the following. Okay, સ્ફિયર છે ટર્મિનલ વેલોસિટી અટેન કરી ગયું છે તો હવે ટર્મિનલ વેલોસિટી અટેન થઈ જશે. એનો મતલબ મેચ ધ કોલમમાં શું કહે છે તો કે બોયન્સ ફોર્સ એક્ટ ઓન ધ સ્ફિયર. બોયન્સ ફોર્સ ઓલવેઝ છે તે કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે, બરાબર. જ્યારે ટર્મિનલ વેલોસિટી થઈ જાય તો બોયન્સ ફોર્સ છે તે શું થઈ જશે કોન્સ્ટન્ટ. પછી શું કીધું વિસ્કસ ફોર્સ ઓન ધ સ્ફિયર. વિસ્કસ ફોર્સ ઓન ધ સ્ફિયર શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે કેમ કે કન્ટિન્યુઅસલી વિસ્કસ ફોર્સ વધે તો FV શું થશે ઇન્ક્રીઝ. રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ઓન ધ સ્ફિયર. રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ઓન ધ સ્ફિયર શું થશે તો કે ડિક્રીઝ થઈ જશે. અને એસેલરેશન 0 કેમ કે કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી મૂવ થશે તો એનો મતલબ A ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0. હવે જો ડાયરેક્ટ A 0થી સ્ટાર્ટ કરીએ તો 1 માં 4 આવતા 3, બરાબર.
અને બોયન્સ ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે, એ પણ ખબર છે. તો એ એકોર્ડિંગલી આપણો આન્સર એ સેટ થઈ જશે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહે છે? રિલેટિવ વેલોસિટી ઓફ ટુ consecutive layers is 8 centimeter per second. If the perpendicular distance between the layer is 0.1 centimeter, the velocity gradient will be. Okay, so for velocity gradient we know dv by dx is equals to velocity gradient 8 divided by 0.1. So answer will be 80 second inverse B. Next question. A liquid is kept in a cylindrical vessel which is rotated along its axis. The liquid arises at the sides as shown in figure. If the radius of the vessel is 0.05 meter and speed of rotation is 2 radian per second, find out the difference of height of liquid at the center and vessel aside. मतलब શું થયું? તો કે એક કન્ટેનરની અંદર લિક્વિડ ફિલ કરેલું છે આ રીતના, અને અહીંયાથી સેન્ટરથી તમે રોટેટ કરાવો છો, તો શું થશે? તો કે પહેલાં તો ઇનિશિયલી હતું, પછી તો કે એંગલમાં રાઇઝ થશે. તો આપણે આ જે રાઇઝ છે તે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો જો તો આ MCQ નંબર 8, આ જ શીટનો MCQ 8, એમાં આપણે એક ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરી હતી, H ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ R² ω² બાય G. બરાબર છે. હવે આમાં શું થશે? દેખો, એકોર્ડિંગ ટુ જો બર્નોલીઝ પ્રિન્સિપલ જો, તો P ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાફ રો v². હવે નિયર એન્ડ્સ છે તો વેલોસિટી ઓફ લિક્વિડ ઇઝ હાયર, સો દેટ પ્રેશર ઇઝ લોઅર. As a result, liquid arises at the side of the cylinder and pressure is dropped. So according to this, હવે H is equals to R² ω² divided by 2G. R² ઓમેગા એટલે શું થશે? તો કે 2πV અથવા 2πf divided by 2G. So therefore 2 into π² into R² v² divided by G. So only G, because cancel થઈ જશે 2 2. And V is equals to R omega. So 2 pi R. 2 pi square R² v² by G. अच्छा हाँ, रिपीट થઈ ગયું, સોરી. તો એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ શું લખાય? તો કે 2 into π² મલ્ટીપ્લાય બાય R એટલે 0.05 નો સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય બાય 2² ડિવાઈડ બાય G. હવે G એટલે 9.8 ને 9.8 એટલે π² એટલે ઓલમોસ્ટ બંને કેન્સલ થઈ જાય. તો આ રીતના જો આન્સર 0.02 મીટર 2 સેન્ટીમીટર એટલે C. ઓકે, સારો ક્વેશ્ચન હતો. શું કહે છે? A small cylinder of ball dropped at a height of viscous. ઓકે, ટર્મિનલ વેલોસિટીનો ફરીથી ક્વેશ્ચન આવ્યો છે. કયો ક્વેશ્ચન સેટ થાય છે? તો આન્સર ફરીથી આવશે કન્ટિન્યુઅસલી વજન પછી ઘટો કરવું બી. ઓકે, સો મૂવિંગ ફર્ધર, a siphon is used to demonstrate the following figure. The density of liquid flowing in siphon is 1.5 gm per cc. The pressure difference between P and S will be, see, according to this, here P and here S is given. Both P and S are on the surface. P and S are on the surface and pressure is atmospheric pressure, so pressure difference will be 0. So answer will be 0. The diagram shows up a T seen from above. The T has been straight and now rotating with the turbulence. A graph showing the velocity, the graph showing speed v with which the liquid is crossing point at distance x from O. Along the radius xo looks like. Okay,
So from the center to circumference we have to move. Center to circumference. So from center to circumference, velocity of liquid goes decreasing. Velocity goes decreasing, and at circumference velocity will be 0, point O and point X. So velocity goes to 0. So according to this, answer will be D. Next question. A body falls in air. The resistance of air depends to the greater extent on the shape of the body. Three different shapes are given below. Identify the combination of air resistance which truly represents the physical situation. Okay. So according to question, if we see figure 3 is streamline flow, and for streamline flow, so resistance will be minimum. For streamline it will be minimum. So and figure 1 will be maximum. Figure 1 has maximum. So according to this, answer will be C. Next question. The surface of an air bubble increase 4 times when it is rise from bottom to top of a water tank where the temperature is uniform. If the atmospheric pressure is 10 meter, so here's atmospheric pressure is 10, or maybe height of water, the depth of the water in the tank will be. Okay. So according to question, suppose એક વોટર ટેન્ક છે આ રીતે. વોટર ટેન્કની અંદર શું કીધું હોય તો કે એક એર ડ્રોપ બબલ છે તે ઉપર આવે છે ધીરે ધીરે, વેર ટેમ્પરેચર ટી કોન્સ્ટન્ટ છે. સો વી નો દેટ પીવી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ nRT, where T constant, then P1 V1 is equals to P2 V2. But here P1 will be underwater and P2 will be surface. You see, if area increase 4 times, A dash is equals to 4A, means 4 into 4 pi r square, means radius increase is twice r. So according to this, if you see volume, so V is equals to 4 by 3 pi r cube. So volume will be 8 times the V initial value or the at bottom tank. So therefore P1 is equals to P2, or P2 is equals to 8 times P. Sorry. Or P2 is equals to 8 times P. So we can write this equation as P plus P0, means 7P plus P0, where P is atmospheric pressure. So 7P0 plus P is equals to 8P. So answer will be 7 into pressure is 10 plus P0. So P0 is almost 10. So answer will be 70 meter. C. If the rise in height of capillary tube of two tubes are 6.6 centimeter and 2.2 centimeter, then the ratio of the radii of the tubes are. Okay. So we know that height is inversely proportional to ratio. So therefore h1 by h2 is equals to r2 by r1. So we can write 2.2 divided by 6.6. The answer will be 1 by 3. So ratio will be 1:3. A spherical drop of water has radius 1 mm. Its surface tension of water is 70 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. The difference of pressure between inside and outside of the spherical drop. So we know that for pressure difference, delta P is equals to 2T by R. So 2 into 70 into 10 to the power minus 3 divided by R, 10 to the power minus 3. The answer is 140. Next question. An aeroplane of mass 3 into 10 to the power 4 kg
and total wings of area 120 meter square is in the level flight at some height. The pressure difference between the upper and lower surface of the wings in kilopascal is okay. So pressure difference P is equals to mg upon A. Both the force will be balanced, because if you see an aeroplane which is at the sky, so there will be two force. One is atmospheric pressure and normal is mg. So mg is equals to Pa. So therefore P is equals to mg by A, and mg mass is 3 into 10 to the power 4 into g10 divided by area 120. So answer will be 25 into 10 to the power 4, or answer is kilopascal. So 25, sorry, this is not 14, sorry, क्या होता है जो cut 4. So 1 by 4 is equals to 10 to the, sorry, 1 by 4 into 10 to the power 4. Answer will be 0.25 into 10 to the power 4. So 2.5 into 10 to the power 3. Option A. Next question. A small hole of area of cross section 2 mm square is present near a bottom of a fully filled tank of open tank, height 2 meter. G is equals to 10 meter per second square, rate of flow of water coming out of a tank. Okay. So according to given question, suppose there is a tank here, and here there is a hole, and if you see, water is coming out like this, and cross section area is 2 mm square, मतलब small hole is there. So we have to find the rate of flow. So for that we know that V is equals to root 2 GH. So root 2 into G10, or height is given in question 2 meter, so multiply by 2. So answer will be 6.32 into 10 to the power, so 6.32 meter per second. But we have to find a rate of flow. So for rate of flow, area into velocity. So area is 2 into 10 to the power minus 6 multiply by 6.32. So answer will be 12.6 into 10 to the power minus 6. Option 1. Next question. A sniper fires a rifle bullet into gasoline tanks, makes a hole on 53 meter below the surface of gasoline. The tank was sealed at 3.1 atmospheric pressure. The stored gasoline has density 660 kg per meter cube. The velocity with which gasoline begins to shoot out of the hole is okay. So according to the question, suppose a tank is filled with gasoline, and here there is one sniper who shoots the bullet, and bullet hits, for example, here, which is 53 meter below the water surface, and this pressure is 3.10 atm inside this condition. So according to Bernoulli's principle, if we use Pb plus H rho g is equals to Pa plus half rho v square.
and therefore 3.1 into 10 to the power 5 plus 553 into 660 into 10 is equals to P plus 1 by 2 660 V2 square. Therefore 2 into here 1.01 into 1.01 into 10 to the power 5 plus 660 into 53 is equals to 1 by 2 660 V square. Therefore half 660 V square is equals to 15.69 into 10 to the power 5. Therefore V square is equals to 5.619 divided by 330 into 10 to the power 5. So V2 is equals to 41. Option B. Next question. Two pieces of metal were immersed in a liquid having equal upthrust on them. Then, okay. So for upthrust, we know that upthrust force is equals to volume into sigma g, where force is directly proportional to volume. So both the pieces must have equal volume. Next question. Water coming out of a mouth of tap filling vertically in a streamline flow forms on tapping column. Example, area of cross section of volume decreases as it moves down. Which of the following statement is accurate? Okay, so for that here we can use as equation of continuity. AV is equals to constant. So for that, if we use AV is equals to constant, then option D satisfies, as the water is almost incompressible. So volume of water flowing out per second must be remains constant. As this equal to velocity and area, the area decreases and velocity increases. Means option D. Figure shows the vertical cross section of a vessel filled with liquid of density rho. The normal thrust per unit area on the wall of the vessel at point P will be shown at. Suppose if we see at point P, so the depth of P below the free surface of water in the vessel, depth of P below the free surface of water is equals to 1 plus H. And since the liquid is extended to equal pressure in all the directions at one all level, hence pressure P is equals to H minus H, means this pressure difference, this height, H minus H into rho g. So H minus H rho g, option C.